Have you ever wondered? Something so tiny, invisible to the naked eye, can bring the entire world to a standstill. Hello, students. Welcome back to BioBlossom Education. I am Sonali Dhanuka, your biology educator, mentor, and guide. Today, we are diving into one of the most fascinating and mysterious entities in biology. Correct. You understand it. Viruses. Are they living or non living? How do they infect our bodies? And why are they so powerful despite being so simple? Oof, there are so many questions to know. But don't worry, beta. In this video, we will explore the structure, characteristics, and life cycle of viruses in a very clear and easy to understand way. So stay tuned because by the end of this video, you will never look at viruses the same way again. You read it right. Virus, the silent invaders. Oh, but why are they known as the silent invaders? Because they silently enter your body, hijack your whole cellular machinery, and replicate without even informing you beta, without immediately causing any symptoms. और जब तक आपको पता चलता है कि आपके बॉडी के साथ कुछ गलत हो रहा है तब तक तो वायरस रेप्लिकेट करके अपने जैसे हजार कॉपीज ऑलरेडी बना चुका होता है. So sad now. So today we are going to read about this silent invaders and who is this virus, what he is doing actually in our body. आज ये सब सवाल का क्वेश्चन हम इस वीडियो में पाएंगे बेटा. So let's get started. Okay, so starting with the first point, viruses are simple, non-cellular, microscopic, infective, intracellular, obligate, parasitic pathogen capable of multiplication and mutation only inside the host cell. Now, you have to remember one thing, that viruses are widely considered as a connecting link between living and non-living thing. That means what? They are both living and non-living. Outside the host body, like as such in the environment, viruses are non-living. That means they cannot reproduce, they cannot multiply. Also, they are acellular. Their body is not made of any cells. But as soon as they enter into a host body, they start to behave like a living. That means they start reproduction, they start multiplying and produce their copies. Okay, so you have to remember this point about virus. And then what are the points written here? That viruses, they are simple, their body is non-cellular, they are very microscopic. That means you can only observe them under a microscope. They are capable of causing infections, they can cause disease. They are intracellular. That means they live inside the host body. Intra means inside. They are obligate parasitic pathogen. Now you understand the meaning of parasite. Parasite means what? Such organism जिनको एक host body का दरकार रहता है to complete their life cycle. They are dependent on the host body for nutrition. And obligate means necessary. Means necessarily viruses have to behave like a parasite. And what is the meaning of word pathogen? Pathogen means disease causing organisms. Mane viruses are such organisms that have the capacity to cause disease. They can multiply, they can cause mutation only inside the host cell. Means they undergoes mutation, they undergoes multiplication, they reproduce only when they are present inside the host body. Now they are very smaller, they are even smaller than prokaryotic or bacterial cells, and their size is only 0.02 to 0.03 micrometer. And outside the host body, they behave as inert particle. That means non-living particle. They do not do anything when they are present outside the host body. A fully assembled infectious virus is called a virion. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आप लोग के डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो फुल्ली असेंबल्ड वायरस रहता है विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज डैश. देन द आंसर विल बी विरियन. And what is the main function of the virion? The main function is to deliver its DNA or RNA genome into the host cell so that the genome can be expressed by the host cell.
आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वायरस का एंड यू विल सी दैट वायरस बॉडी इज़ वेरी सिंपल. वायरस के बॉडी में कुछ नहीं होता है, ओनली अ प्रोटीन कोट or a protein covering, and inside that a DNA or RNA genetic material is present. And the function of virion is to deliver that genetic material to the host cell so that the genetic material can multiply and can be expressed inside the host cell. Because virus does not contain any expression machinery, means they cannot replicate, they cannot transcribe or translate the genetic material inside them. And for all this process, they used the machinery of the host body. Okay, so viruses were first discovered in the late 19th century, actually in the year 1892 by Dmitry Ivanovsky. And what he actually observed was that he recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. मतलब क्या हुआ बेटा, उस टाइम पे देखा क्या कि टोबैको प्लांट वेर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज जिसका नाम था टोबैको मोजाइक डिजीज. एंड डिमिट्री वॉज द वन हु एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड that what type of microbes were causing that tobacco mosaic disease to the tobacco plant. He also proved that the microorganism that were actually causing the disease were even smaller than bacteria. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिजीज़ को कर रहे थे टोबैको प्लांट में, वो एक्चुअली बैक्टीरिया से भी स्मॉल थे. और ये बात उनको कैसे पता चली, तो उन्होंने देखा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी पास कर जा रहे थे. यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस, बट ये बात तो बाद में पता चला. डिमिट्री ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि वो चीज़ वायरस है. वायरस वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय अनदर साइंटिस्ट, बट डिमिट्री प्रूफ दैट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टोबैको मोजाइक डिजीज को कर रहा है वो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स को भी क्रॉस कर सकता है. दैट मीन्स दे आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. And the actual virus word was used by Martinus Bejernik in 1898. He coined the term virus, and he described virus as a contagious living fluid. Now what happened in 1898, Martinus demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. मतलब इन्होंने क्या किया, जो टोबैको मोजाइक डिजीज़ अफेक्टेड प्लांट्स थे उनमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट बाहर निकाला और उस एक्सट्रैक्ट से वो हेल्दी प्लांट्स को अफेक्ट करने का कोशिश की. और उन्होंने देखा कि हेल्दी प्लांट्स गॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स. एंड एज अ रिजल्ट ही न्यू दैट दिस वॉज समथिंग विच वॉज ट्रांसमिटिंग. ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्रांसमिट कर पा रहा है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया वायरस. और जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाला था फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स टू अफेक्ट द हेल्दी प्लांट्स, उस एक्सट्रैक्ट को उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियस लिविंग फ्लूइड और कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडियम. Okay, now actually virus word has derived from a Latin word which means venom or poison, and the study of virus is known as virology. Okay, now viruses are cosmopolitan in distribution. Cosmopolitan मतलब क्या होता है बेटा, that found everywhere. हर जगह आप वायरस को देखने मिल सकता है आपको. एयर, वाटर, सॉयल, लिविंग बॉडी एज वेल एज इवन इन डेड बॉडी ऑल्सो viruses are present. Clear? Then next, moving to the next slide, most of the viruses can pass through bacterial filter. ये तो हमने already discussion किया, because they are even smaller than bacteria. Then virus attack only specific host. That means viruses have their specific host, और वो उन्हीं को ही affect करेंगे. और जो भी host को वो affect करते हैं, host के body में they start to produce some characteristic symptoms. Then viruses are sensitive to temperature and humidity. They can also get inactivated by chemotherapy and thermotherapy. Then
जैसे मैंने बोला, वायरसेस का बॉडी बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. दे डू नॉट कंटेन एनी स्ट्रक्चर लाइक लिविंग बॉडी. दे डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स, एनीथिंग. एंड दैट इज़ द रीज़न द पॉइंट इज रिटन हियर दैट उनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होता है. खाली अगर हम उनका बॉडी को देखेंगे तो दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच कैन बी डीएनए और आरएनए, एंड दैट न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन शीथ और कोट और प्रोटीन कैप्सिड. आगे हम उनका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, जिसमें आप देखोगे कि बाहर में बस एक कवरिंग है विच इज़ मेड ऑफ प्रोटीन, एंड इनसाइड दैट ओनली द न्यूक्लिक एसिड विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट. And in very rare viruses, outside the protein covering there is an envelope which is basically made of lipid. That means a lipid made envelope is also present, but in some viruses only. Then next point, the nucleic acid can be DNA or RNA. The DNA may be single stranded or double stranded. They cannot grow on artificial media. वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम बैक्टीरिया को देखेंगे तो दे कैन ग्रो, हम लोग बैक्टीरियल कल्चर कर सकते हैं लैब में, बट वायरल कल्चर इज नेवर पॉसिबल बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो. क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि वो आउटसाइड द एनवायरमेंट दे आर इनर्ट पार्टिकल्स, दे रिक्वायर अ प्रॉपर होस्ट बॉडी टू बिहेव लाइक लिविंग. तो ऑब्वियसली हम वायरल कल्चर नहीं कर सकते. दे आर विदाउट एनी सेक्स ऑर्गेन. दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन और सेल वॉल लाइक कवरिंग. They can attack plant, animals and bacteria. Even viruses attack bacteria. Okay. They are transmitted from one place to other by soil or by vectors or by vegetative propagation. Means that they are transmittable. They can be transmitted from one place to another, from one body to another body. Then here comes the next part, which is the structure of virus. Okay, now we will be studying the structure of virus. Okay, तो first point क्या लिखा है बेटा? The basic structure of virus is nucleic acid core which can be DNA or RNA but not both, surrounded by a protein coat. तो ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट बोला कि बाहर में एक प्रोटीन कोट रहता है. प्रोटीन कोट को आप लोग प्रोटीन कैप्सिड भी बोल सकते हो, प्रोटीन कवरिंग भी बोल सकते हो, एंड इनसाइड दैट only nucleic acid is present which can be DNA or RNA, but you have to remember that it can never be both DNA और RNA. ओके, कोर वर्ड का मतलब क्या होता है? सेंटर. कोर वर्ड का मतलब होता है सेंटर, यानी सेंटर में न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट. नाउ न्यूक्लिक एसिड जो कि सेंटर में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम, and the protein covering which is covering the nucleic acid, that is known as capsid. Okay, and in some viruses outside the capsid an envelope is present. कैप्सिड के बाहर में बेटा और एक एनवेलप प्रेजेंट होगा विच इज मेड ऑफ लिपिड्स. दैट कैन बी ग्लाइकोप्रोटीन लेयर और कैन बी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर. बाई मीन्स टू. That means the envelope can be made of phospholipid bilayer or it can be made of glycoprotein or it can be made by both glycoprotein and phospholipid bilayer. Okay. Okay बेटा, देखो सेंटर में क्या प्रेजेंट है? सेंटर में जो प्रेजेंट है दैट इज वायरल जीनोम. जीनोम मीन्स जेनेटिक मटेरियल विच कैन बी डीएनए और आरएनए. दैट जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय अ कवरिंग विच इज मेड ऑफ प्रोटीन. हमने पढ़ा, उसी को लिखा गया है वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड. न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियो रेफर्स टू न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड इज द प्रोटीन कवर. माने ओवरऑल कंप्लीट ये स्ट्रक्चर को बोला गया है न्यूक्लियोकैप्सिड. दैट मीन्स द वायरस कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड. ओके, एंड इन सम वायरसेस एज आई टोल्ड an extra outer layer is present which is known as envelope. As you can see, envelope contains phospholipid bilayer and glycoprotein. So basically these are glycoproteins that are present in the envelope layer. And there is a viral tegument. Tegument means covering.
बेसिकली अ प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। ओके, तो फर्स्ट क्या है, सेंटर में देयर इज जेनेटिक मटेरियल, आफ्टर दैट द जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट, कंप्लीट वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। Then after that, the whole structure is covered by a protective covering, which is referred to as tegument. And then it is covered by envelope, which is made of glycoproteins and phospholipid bilayer. Okay, I hope आप लोग इतना तक क्लियर हो गए हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट वाइज सब नोट डाउन किया गया है, जो भी हमने अभी पढ़ा बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, वही यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो हम फटाक से एक बार रीड कर लेंगे। Now, first is genome, which is the genetic material which is present in the core or the center of the virus. Now, viral genomes are smaller in size. It can be DNA or RNA. The DNA or RNA can be single-stranded or double-stranded, linear or circular. Okay. Now, जिस वायरस में DNA जेनेटिक मटेरियल की जैसे प्रेजेंट है, उसको हम लोग DNA वायरस बोलते हैं। एंड सेम जिस वायरस में आरएनए प्रेजेंट है एज जेनेटिक मटेरियल, उसे हम लोग आरएनए वायरस बोलते हैं। क्लियर? देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज कैप्सिड, विच इज बेसिकली द आउटर लेयर, एंड कैप्सिड को हम लोग कोट भी बोल सकते हैं, शेल भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैप्सिड? देन it serves as impenetrable shell around the nucleic acid. Basically, it is covering the nucleic acid and it is like a shell which is actually providing protection. It also helps to introduce viral genome into host cell during infection. Now क्या होगा बेटा, जब वायरस किसी भी होस्ट बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो this capsid makes sure that the viral genome enters into the host body properly so that infection can be caused. Clear? Now, next point, capsid is made up of number of morphological similar subunits called capsomere. Okay, now basically क्या होता है बेटा, देखो, suppose this is protein capsid, जिसके अंदर में फिर प्रेजेंट होगा न्यूक्लिक एसिड विच कैन बी डीएनए और आरएनए। नाउ ये जो प्रोटीन कैप्सिड है, ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलके बना रहता है, विच आर एक्चुअली आइडेंटिकल टू ईच अदर, लाइक दिस। इट इज मेड ऑफ मेनी सब यूनिट्स and these subunits are known as capsomeres. That means many capsomeres combined to form a capsid. And then the capsomere is further composed of protomere. Okay, so basically this is the capsomere which combine to form a capsid, and various protomeres combine to form capsomere. And all these capsomere are tightly packed, they are arranged precisely, tightly together, and in a repeated manner they are present to form a complete capsid. नाउ बेटा जरूरी नहीं है कि हम किसी फिक्स्ड नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स को लेके चलें जो कि एक वायरस का कैप्सिड फॉर्म कर रहा है। द नंबर ऑफ कैप्सोमियर इज वेरीज, दैट मीन फ्रॉम वायरस टू वायरस इट इज डिफरेंट, एंड द होल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर which is nucleic acid plus protein coat is referred to as virus nucleocapsid, जो कि मैंने डायग्राम में बोला। Virus nucleocapsid, that means complete the structure of virus which is containing a nucleic acid and protein coat. Okay, then moving to the next, the third part is envelope. नाउ बेसिकली तो स्ट्रक्चर वही रहता है न्यूक्लियोकैप्सिड, बट इन सम वायरस, ओके, आपको याद रखना है, ओनली इन सम वायरस क्या होता है, आउटसाइड द न्यूक्लियोकैप्सिड एन एनवेलप इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, एंड द एनवेलप इज अ बाइलेयर ऑफ लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन मैंने क्या बोला था आपको, कि आपको वर्ड को ब्रेक करना है। लिपो मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ग्लाइको प्लस प्रोटीन, नाउ ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो एनवेलप एक्चुअली एक बाइलेयर है जो कि लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बना हुआ है।
Okay, and in some virus the glycoprotein projects out in the form of spike called peplomere. स्पाइक मतलब होता है कांटा लाइक स्ट्रक्चर. ओके, आप लोग ये डायग्राम को और एक बार देखो. तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम. आप लोग ध्यान से डायग्राम को देखो. ओके, आई एम पॉइंटिंग आउट. दिस इज एक्चुअली टू लेयर. ओके, दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. हमने अभी पढ़ा कि एनवेलप इज अ बाई लेयर. तो दिस इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड लेयर. ओके, एंड आप लोग देखो ये जो स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, दे आर एक्चुअली द पेप्लोमियर्स. They are like spikes from the envelope. They are projecting outside like spikes. And these structures are called as peplomeres. Clear? Now, the next important point you have to remember is the virus without envelope is called a naked virus. Okay? जिस वायरस का एनवेलप नहीं होगा उसको हम लोग naked virus consider करते हैं. Then the next point is enzymes. Obviously, virus contain enzymes and which is actually creating infection in the host body. For example, bacteriophage. Okay, bacteriophage के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी. Bacteriophage, that means such virus which affects bacteria. Okay, here the meaning of phage is actually virus. Okay, bacteriophage, that means the virus that use bacteria as host. Now what happens, such virus contain lysozymes. They contain an enzyme lysozyme. And what is the role of lysozyme? बेटा lysozyme का काम क्या होता है? तो वो क्या करता है, वायरस का जो होस्ट है बैक्टीरियल सेल, उसके पूरे बॉडी में क्या करता है, स्मॉल स्मॉल होल्स बना देता है. As a result of which virus का genetic material can enter inside the bacterial cell. Okay, then some virus contain their own nucleic acid polymerase which transcribe the viral genome into mRNA during replication process. Now, मैंने बोला वायरस के पास कोई भी मैसिनरी प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही रेप्लिकेशन, ना ही ट्रांसक्रिप्शन, ना ही ट्रांसलेशन के लिए. And for all these they use the machinery system of the host body. Now what happens, कुछ वायरस के पास क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीमरेज एंजाइम. पॉलीमरेज मीन्स व्हाट, द एंजाइम that performs the function of polymerization like DNA polymerase, RNA polymerase. Now this enzyme performs the role of transcription in virus. वायरस के पास ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या हेल्प करता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, यानी बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवाने के लिए हेल्प करता है. क्लियर? नेक्स्ट आप लोग एक वर्ड याद रखना है, रेट्रोवायरस, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर रेट्रोवायरस? तो रेट्रोवायरस आर आरएनए वायरस. एंड व्हाट आर आरएनए वायरस? अभी मैंने बताया, सच वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. ओके, तो रेट्रोवायरस मींस दैट वायरस whose genetic material is RNA and they replicates inside the host cell as DNA intermediate. This virus possesses an RNA dependent DNA polymerase called reverse transcriptase. ओके, तो बेसिकली जो भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है वो लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट परफॉर्म ट्रांसक्रिप्शन, रेदर दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, डीएनए टू आरएनए, बट इनके पास तो आरएनए प्रेजेंट है एज जेनेटिक मटेरियल, तो बेसिकली इनको क्या करना होगा, आरएनए से डीएनए बनाना होगा. दैट मीन्स दे हैव टू रिवर्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. And for this they require some different type of enzymes which are reverse transcriptase enzyme. And basically this reverse transcriptase enzyme is an RNA dependent DNA polymerase. Okay, that will make DNA from their RNA genetic material. Okay, I hope up to this आप लोग को समझ आ रही होगी बातें. Then next is classification of virus. So basically viruses are classified into many groups on different bases. Different criteria लेके, like
depending on host, virion structure composition, mode of reproduction, nature of any disease caused. माने on different criteria, virus are classified into many groups. And the first classification जो हम लोग यहाँ से start कर रहे हैं, that is on the basis of nature of host. Okay, that means कौन से host को virus affect कर रहे हैं, उस बेसिस में हम लोग वायरसेस को क्लासिफाई करेंगे इनटू 3 ग्रुप्स, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस, और जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैक्टीरियोफेज. ओके बेटा, तो यहाँ पे एक छोटा सा सिली मिस्टेक है, आप लोग प्लीज इस चीज को कंसिडर कर लेना. हो जाता है बेटा, कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है. ओके, तो हम इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं ना. ओके, तो बैक्टीरियोफेज का स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना. The spelling is like this, PHAGE. Okay. Then next. Okay, first is plant virus. Plant virus means what? ऐसे वायरस जो कि प्लांट को यूज कर रहे हैं एज देयर होस्ट. एंड दिस प्लांट वायरस कैन अफेक्ट मेनी क्रॉप प्लांट्स. सब माने बेसिकली सब क्रॉप प्लांट्स को ये लोग अफेक्ट कर सकते हैं. पोटैटो, टमेटो. ओके, now one of the major important plant virus which you have to remember is tobacco mosaic virus. Okay, okay, so basically tobacco mosaic virus is such a virus which affects the leaves of the tobacco plant. Okay, क्या करता है बेटा, ये एक ऐसा वायरस है जो कि टोबैको प्लांट के लीव्स को अफेक्ट करता है. ओके, एंड इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज. ओके, तो बेसिकली टोबैको मोजाइक वायरस कॉजेस टोबैको मोजाइक डिजीज इन द लीव्स ऑफ द टोबैको प्लांट. ओके, ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, टीएमवी इज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड. आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट वायरस जो कि डिस्कवर्ड किया गया था दैट इज टीएमवी यानी टोबैको मोजाइक वायरस. Now you can see the structure of tobacco mosaic virus. नीचे दिया हुआ है वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम. ओके, तो आप लोग देख रहे हो ऊपर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है विच इज आरएनए. ओके, tobacco mosaic virus is an RNA virus. That means the genetic material is RNA. And कौन सा RNA रहता है, तो single stranded RNA. Okay, the RNA is single stranded RNA. And except the genetic material, the next thing which is present is capsid. Okay, the next thing which is present is sorry, okay, and the capsid is made of many small subunits as you can see in the diagram, which is known as capsomeres, and they are arranged in an helical or polyhedral geometric forms. Okay, then next is animal virus. नाउ जब वायरस यूटिलाइज करते हैं एनिमल को एज देयर होस्ट, इट इज बेसिकली एन एनिमल वायरस. सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल वायरस आर गिवन. ओके, आई एम हाइलाइटिंग इट. वेरियोला वायरस, सिंप्लेक्स हर्पिस वायरस, वेरिसिला वायरस एंड एसेट्रा. ओके, आप लोग डायग्राम भी देख सकते हो, नीचे वेरियोला वायरस का डायग्राम दिया हुआ है. Now the next one is bacterial virus और बैक्टीरियोफेज. तो बेटा मैंने आपको कहा फेज का मतलब होता है वायरस, और ऑल्सो आप लोग बोल सकते हो फेज का मतलब होता है ईटर्स. Means basically these are bacterial eaters. What are bacteriophage? Bacteriophage are the bacterial eaters. Okay, so these were first observed in 1915 by F. Tuot in England and in 1917 by F.D. Herrely in France. Okay, so if we will see the structure of bacteriophage, तो आप लोग देख सकते हो डायग्राम दिया हुआ है. Now bacteriophage are about 24 to 200 nanometer in diameter, and the structure of bacteriophage consists of two parts as you can see. One is head and the second one is tail.
ओके, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट हेड। तो द हेड इज बेसिकली अ न्यूक्लियोकैप्सिड स्ट्रक्चर। ओके, दैट मीन्स व्हाट, तो आप लोग देख रहे हो कोर रीजन में और सेंटर रीजन में प्रेजेंट है डीएनए विच इज द जेनेटिक मटेरियल। हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए विच इज प्रेजेंट इन द कोर और सेंटर and it is surrounded outside by a capsid which is made of protein. ओके, एंड इन दिस केस अगर आप देखोगे कैप्सिड हेड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इट इज आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल कैप्सिड हेड इज प्रेजेंट। Okay, then the next reason is collar reason. Basically collar connects the head and tail. Then there is tail reason. The covering of tail is tail sheath, which is actually a protective covering, and inside the tail sheath a tail tube is present. Okay, then tail fibers are present. The tail fibers are connected to the base plate, and आप देख सकते हो base plate के साथ along with tail fibers some spikes are also connected. The spikes are also known as tail pins. Now, what is the function of tail fibers? So basically, they helps in the attachment of bacteriophage with the host body. Okay, and basal plate they secrete some enzymes like lysozyme. Okay, which helps to dissolve the host body in the area where tail fibers will enter. देन हमने जो पढ़ा अबाउट द स्ट्रक्चर वो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट वाइज। बैक्टीरियोफेज को सिंपली आप लोग फेज भी बोल सकते हो। इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट्स एंड रेप्लिकेट्स इनसाइड द बैक्टीरिया। Okay, now the bacteriophage word is derived from a Greek word phagin, which means to devour, means to attack. Okay, or to consume or to eat भी आप लोग बोल सकते हो। Now bacteriophage are the most abundant and diverse biological entities on earth found wherever bacteria exist. तो obviously they are bacterial eaters, तो जहाँ भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हम लोग को बैक्टीरियोफेज देखने को मिलेगा। और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड which is basically DNA and the outer covering is protein which is capsid. ओके, ना उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, कॉम्प्लेक्स हेड टेल स्ट्रक्चर रहता है। फर्स्ट वन इज हेड जिसको कि हम लोग कैप्सिड बोल रहे हैं विच इज एक्चुअली कवरिंग द जेनेटिक मटेरियल। देन देयर इज अ टेल which act as a needle like apparatus to inject DNA into the host body, and then there are tail fibers and spikes or tail pins which are used to recognize and latch onto specific receptors on the bacterial surface. माने basically these tail fibers and tail fins help the bacteriophage to get attached to the host body which is bacteria. Okay. Then next we will study the classification of virus based on the presence of nucleic acid. हमने बात किया कि डिफरेंट क्राइटेरियाज के हिसाब से वायरस का क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो रखा है। तो पहले हमने एक क्राइटेरिया देखा बेस्ड ऑन द होस्ट, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया विच इज ऑन द बेस्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नाउ वेरी सिंपल, जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा दैट इज डीएनए वायरस, जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा दैट इज आरएनए वायरस। ओके, देन डीएनए वायरस का अगर हम बात करें तो देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए वायरस। वन इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, दैट मीन्स जिस वायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, एग्जाम्पल पिकोरना वायरस, पार्बो वायरस। एंड सेम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, दैट मीन्स जिस वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, एग्जाम्पल इज एडिनो वायरस, हर्पीस वायरस। Then RNA virus, there are two different types of RNA virus. First one is double-stranded RNA virus, example reovirus, and then single-stranded RNA virus. That means जिस RNA virus के पास single-stranded RNA present है as genetic material. Now, single-stranded RNA virus is further classified into two positive sense RNA and negative sense RNA. दैट मीन्स फर्दर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है एज पॉजिटिव सेंस आरएनए एंड नेगेटिव सेंस आरएनए।
Now, example is polio virus, hepatitis B, rabies virus, influenza virus. Okay. Then next, next is based on the replication properties and the site of replication. ओके दैट मीन्स हमको इतना तो पता है कि वायरस होस्ट सेल को इन्वेड कर रहा है, एंटर कर रहा है. क्यों एंटर कर रहा है? फॉर रेप्लिकेशन, फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. तो ऑन दैट बेसिस हम लोग देखेंगे कि वायरस कितने टाइप के हैं. फर्स्ट है रेप्लिकेशन विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल. दैट मीन्स वायरस क्या कर रहा है? द वायरस इज एंटरिंग द होस्ट बॉडी एंड इट इज रेप्लिकेटिंग इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट. ओके, व्हाट इज द एग्जांपल? ऑल द आरएनए वायरस. सब आरएनए वायरस ऐसा ही करते हैं एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा वायरस. देन सेकेंड इज रेप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट सेल. एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, पॉक्स वायरस. Then replication within the nucleus of the host cell. Example, all the DNA virus except pox virus. Then replication of the virus through the double-stranded DNA intermediate. Okay, तो example क्या होगा? All DNA virus, also retrovirus and some tumor-causing RNA virus. Then last is replication of the virus through single-stranded RNA intermediate. Example will be all RNA virus except reovirus and tumor-causing RNA virus. Then next is based on the mode of transmission. First one is airborne infection. That means क्या होगा बेटा? यहाँ पे virus transmit हो रहा है through the air. ओके, एग्जाम्पल हो जाएगा स्वाइन फ्लू एंड राइनो वायरस. देन फीकल ओरल रूट. दैट मीन्स व्हाट? वायरस इज ट्रांसमिटिंग थ्रू कॉन्टामिनेटेड और इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड. एग्जाम्पल विल बी हेपेटाइटिस ए वायरस, पोलियो वायरस, रोटा वायरस. देन नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एग्जाम्पल हो जाएगा रेट्रोवायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसेट्रा. देन ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. दैट मीन्स यहाँ पे बेटा वायरस कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफर. एग्जाम्पल विल बी हेपेटाइटिस बी वायरस एंड HIV वायरस विच इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. देन जूनोसिस. जूनोसिस मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज ड्यू टू द बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स टू ह्यूमन. यहाँ पे ह्यूमन्स को ही इन्फेक्शन हो रहा है, ह्यूमन्स में ही वायरस ट्रांसमिट हो रहे हैं बट थ्रू द बाइटिंग ऑफ एनी इन्फेक्टेड एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट. फॉर एग्जाम्पल रेबीज वायरस. रेबीज वायरस कब ट्रांसमिट होता है बेटा? जब इन्फेक्टेड डॉग बाइट करता है. ओके, अगर एक हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्टेड डॉग बाइट कर रहा है देन रेबीज वायरस विल बी ट्रांसमिटेड. Similarly, alpha virus, flebby virus, Ebola virus, and etc. Then the last classification is on the basis of structure or symmetry. ओके, तो वायरस कम्स इन डिफरेंट शेप्स. वायरस का बहुत सारा डिफरेंट शेप्स हो सकता है, लाइक बेसिक हेलिकल टू आइकोसाहेड्रल शेप्स टू मोर इंट्रिकेट एंड कॉम्प्लेक्स वन. Okay, so on the basis of different shapes and symmetry of virus, following classification is done. Like complex virus होते हैं, example pox virus. Radial symmetry virus है, example bacteriophage. Then cubical or icosahedral symmetry shaped virus, example will be Rio virus, Picorna virus. Then rod or spiral shaped or helical symmetry virus, example will be paramyxovirus एंड ऑर्थोमिक्सोवायरस. ओके, सेम ये सिमेट्री का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो. डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट सिमेट्रीज ऑफ वायरस इज शोन इन दिस डायग्राम. नंबर 1 आप लोग देख लो, नेकेड आइकोसाहेड्रल, बी नेकेड हेलिकल. देन नेकेड. नेकेड हम क्यों बोल रहे हैं बेटा? ये मैंने आपको बताया था, अगर एनवेलप कवरिंग है तो हम उसको नेकेड वायरस नहीं बोलेंगे, बट जो वायरस जिसका एनवेलप कवरिंग नहीं रहता है उसको हम लोग नेकेड वायरस बोलते हैं. तो ए एंड बी आर नेकेड, whereas आप सी एंड डी देख लो, वो लोग एनवेलप्ड है, मीन्स दे आर कवर्ड बाय एनवेलप, जिसको कि हम लोग नेकेड नहीं बोल रहे हैं. क्लियर? So this is all about today's lecture. Thank you. I hope you find this video
ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो एंड इफ़ यू वांट सच मोर वीडियोस, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट about your experience and feedback. I will love to see your comments, and please subscribe the channel to get the notification for further topics. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस. टिल देन कीप लर्निंग